Hello, everyone. Today we have got our mentor, our loved one, whom we respect a lot, admire a lot, Mr. Saurabh Upreti, who is head mentor of Knowledge Junction, Haldwani. And Saurabh Sir is a spiritual edupreneur, technical freak, owner of Knowledge Junction 2.0 channel, JRF English plus 9 times NET English, 3 SLETS, and recently Sir has cracked GATE, got uh, rank all over India, rank 38. So this is a big achievement. And today I am Ajaypal Singh Negi, getting the privilege of speaking to Sir, and in this session, we will be discussing a few questions, and would like to know from Sir that what are his plans for his students. So let me start with Sir first. सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। जी जी सर, थैंक यू सो मच नेगी सर। और आपने ये इंट्रोडक्शन जो भी दिया मेरा, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा सर, क्योंकि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे चैनल पे भी आए और इस इंटरव्यू के लिए भी आप आए। और आप भी बहुत ही लव्ड वन हैं हमारे केजे फैमिली में। काफ़ी थैंक यू स्टूडेंट्स के लिए आपने जो है सेल्फलेसली उनको गाइडेंस और काउंसलिंग का काम किया है। तो माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सर, जैसे कि आपने बोला कि नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल, इसकी जो नींव है 2014 में नॉलेज जंक्शन हमने स्टैब्लिश किया था। और मेरे साथ मेरे गुरुजी भुवन भट्ट जी थे, और हम दोनों ने मिलकर इस छोटे से एक इंस्टीट्यूट को हल्द्वानी में शुरू किया। बाय दैट टाइम मेरा ऑलरेडी नेट था। इवेंचुअली जो है जेआरएफ हुआ, फिर 9 बार नेट का जो एक अचीवमेंट हुआ, क्योंकि मैं जेआरएफ के लिए ट्राई करता रहा तो नेट हो गए बहुत सारे। और फिर 3 स्टेट्स, जिसमें कि उत्तराखंड और गुजरात और हिमाचल, ये 3 स्टेट्स को हमने निकाला। और इसी इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे कि राजस्थान वाले के लिए ऑलरेडी अप्लाइड हैं और एमपी वाले के लिए ऑलरेडी अप्लाइड हैं स्लेट के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि ऑल ओवर इंडिया जो गेट रैंक 38 आया, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा सर। और बहुत अच्छा लगा कि अभी भी हम जो है एक अगर हार्ड वर्क करें, अपने सब्जेक्ट को डीप जाते रहें, तो सर। हम किसी भी स्केल को अचीव कर सकते हैं सर। Sir, one thing I must say that you have chosen English as your subject. So it is really a fantastic thing for all the English loving people कि आपने English literature को अपना subject रखा। क्योंकि अगर आप जो है किसी और सब्जेक्ट को भी रखते तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल होते। लेकिन उत्तराखंड जैसे स्टेट में इतना बड़ा अचीवमेंट ऐसे बहुत कम लोग हैं पैन इंडिया, जितना आपने जो है अपने पास ले लिया है इतनी कम उम्र में। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि जो है कि व्हाई इंग्लिश। जी सर, एक्चुअली मैं 12th साइंस स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया है। और सर। इंग्लिश लकीली मेरी लाइफ में क्लास 10th जब मैंने डीपीएस से किया, कोरापुट उड़ीसा से, अपने मामा जी लोगों के साथ, तो वहाँ पर ही इंग्लिश ने अपनी एक प्रेजेंस दे दी थी। शेरलॉक होम्स की स्टोरीज को पढ़ा मैंने, वहाँ से एक मेरा नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया था सर। और उसके बाद लाइफ सिचुएशंस ऐसी रही कि फिर मैंने कन्वर्जिस, एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, वहाँ काम किया। तो वहां पर काम करके ब्रिटिश एक्सेंट को सीख लिया। एंड एट द सर। सेम टाइम उसके बाद मैं बीएचयू से मास कम्युनिकेशन किया। तो वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही मैं प्रिंट मीडिया के लिए सीख रहा था। तो इवेंचुअली इंग्लिश गाहे बगाहे आती रही लाइफ में। और फिर एमए इंग्लिश जब मैंने किया, तो मैंने हमेशा बच्चों को बताया है कि शैले की एक एलेजी है कीट्स पर एडोनिस। तो वन फाइन विंटर इवनिंग आई वाज गोइंग थ्रू दैट पोएम, it touched my heart so much that I started, or rather I made my decision impulsively that evening that I am सर। going to earn my bread and butter through English. So वहाँ से फिर कारवां चला सर। फिर एमए इंग्लिश हुआ, और उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस पहला वाला क्रैक किया था, वो मैंने इवेंचुअली फिर छोड़ दिया था। तो फिर नेट वगैरह हुआ, और फिर एक कहानी चलती रही।
तो अभी भी तो सर जो है आप पीएचडी कर ही रहे हैं, जो आपने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आपने फिर से जो है एज ए वॉरियर यू हैव चोजन दैट पाथ। तो जी सर पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स। हाँ सर, पीएचडी एंट्रेंस 2021 वाला फर्स्ट रैंक निकालने का सौभाग्य मिला। SSJU यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ ही थे सर। और तो ऐसा रहा कि बस अपने आप को लर्निंग में नहीं छोड़ना है। और एट द सेम टाइम जब रैंक 1 निकला तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने आप को, जो हमारा यंग जनरेशन है जो कि बहुत पढ़ा है और बहुत चीज़ों में अडेप्टेबल है, उनके साथ अपने आप को रखने में बड़ा मज़ा आता है। और कंपटीशन हमारा खुद से होना चाहिए। हम खुद ही को बेहतर करते रहें तो हम देखेंगे इवेंचुअली कि हम चाहे वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, वहाँ पर हम इवेंचुअली कोई भी जॉब या फिर हम कोई भी कंपटीशन को ग्रैब कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, धार देते रहें। अपने आप को सर कीप कीप रिफाइनिंग आवर एजेस, तो वही है सर। सर अभी आते हैं हम लोग जो है आपने जो है 9 times यू हैव क्रैक्ड नेट एग्जाम विच इज ऑल ओवर इंडिया एंड वेरी टफ एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली यू हैव आल्सो क्रैक्ड गेट। सो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि 2018-19 में आपने उत्तराखंड स्टेट का जो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फाइनल सिलेक्शन पाने के बाद you could have joined as an assistant professor and you would be having a very fantabulous life। लेकिन वो ना ज्वाइन करके आपने जो अपने स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज जंक्शन को आगे बढ़ाते रहे, और वो जॉब आपने जो है छोड़ दी, जो कि जो है कई लोगों के लिए एक सपना होती है। तो हम्म। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया आपने। सर, टू बी वेरी कैंडिड विद यू, ये क्वेश्चन मैंने इस पे इंटरव्यू पहले भी दिया था, बड़ा फेमस रहा था हमारा पुराने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फिर से आपको ये बताऊंगा, सारे बच्चों को भी इस चैनल, हमारे अपने चैनल से भी बताना चाहूंगा कि देखिए, इस स्टोरी में सबसे खास बात यह है कि जब मैंने वो उस जॉब को अचीव करा, उससे पहले का जो मेरा हार्डवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो आप लगाइए कि इतनी बार मैं नेट हो चुका था और कितनी बार मैंने जो है जॉब्स के लिए अप्लाई किया था प्राइवेट में। तो जब वो जॉब निकला इवेंचुअली, तो मैं अपने, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एक पीक पर हूँ, कोचिंग के प्राइम पर हूँ। और एट द सेम टाइम मेरा ऐसा मानना भी था कि जो अगर मैं सिस्टम में जाऊंगा तो एट द सेम टाइम जो मेरी अपनी जो वैल्यूएबल लर्निंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद कहीं ना कहीं ना मैं भूल जाऊं। और उसको देखते हुए, और एक थोड़ा सा एक स्ट्रीक है मेरे अंदर, जैसे आपने बताया एड्यूप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्ट्रीक थी कि आई विल स्टिल मैनेज विदाउट इट। तो एक उस तरीके की बात है। अगर हम इसको स्टूडेंट्स के हितों से जोड़ते हुए देखें तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, अगर आप सिस्टम में चले जाते तो शायद हमें इतना आपकी नॉलेज या लर्निंग्स नहीं मिलती। तो शायद मैं इस बात से थोड़ा सा ये रखता हूँ कि अगर मैं सिस्टम में होता, या अगर मैं अभी बीच में जो मेरे साथ थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, हेल्थ स्केयर आया, तो उसके बाद अगर इवेंचुअली मैं आगे भी अगर अपना कुछ देखता हूँ जॉब वगैरह का, तो वहाँ से भी मैं स्टूडेंट्स के लिए ये काम करते ही रहूँगा। तो मतलब मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये था कि उस समय जो मेरी अपनी कोचिंग का जो एक प्राइम था, उसको देखते हुए, प्लस फिर मेरी सिचुएशन ऐसी थी, होम सिचुएशन की, मैं वहाँ पर भी हल्द्वानी को ही प्रेफर कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने उस समय उस जॉब को छोड़ा। बट यकीनन अभी जब ये हेल्थ स्केयर हुआ, तो वहाँ पर फिर जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी एक इम्पोर्टेंस भी सर समझ में आई। तो कई चीज़ें हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से, लेकिन इसको कोई आदर्श उदाहरण ना माने, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जॉब को छोड़ना और फिर दोबारा अगर आप चाहें तो कभी भी ले लेना। तो और ये बड़ा डेंजरस गेम है। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनके लिए बस यही स्टोरी है कि आप लर्निंग को ना छोड़ें। इवेंचुअली अगर लर्निंग में आपको लगता है कि शायद कोई भी चीज़ बाधा आ रही है, तो आप वो रिस्क ले सकते हैं, बट टेक द रिस्क एट योर ओन, यू कैन से ऑन योर ओन। एंड उसके लिए फिर किसी भी चीज को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। Very nice, sir. Very nice. One thing I must say that again, if you get the opportunities, so definitely you could crack assistant professor exam as many times as you wish. So that is not a big deal for you.
Thank you, sir. It's very much your cup of tea. Right, sir. So, one more thing I would like to ask you that recently you have cracked GATE exam, sir, and your all over India rank was 38. So, living in a small place like Haldwani and managing your institution and your education and your spirituality, everything, how you do all this, and what are the benefits of cracking GATE for any student, sir? Sir, very good question. I think GATE eventually is a gateway for, you can say, it's a graduation aptitude test for engineering, the full form of GATE. And it stands for all the graduates basically who have done their graduation, especially in engineering streams like BTech graduates. But now GATE has opened its, you can say, gateway, I would say, for economics, English, that is the applied science subjects like our English literature. So I was lucky enough that I got the first crack. This time this was my first attempt at GATE. Now, before attempting GATE, you must, if you look at my history, you know that I have already qualified NET 9 times, JRF. So Yes, that right. was already there, sir. And I did not especially prepare anything extra for qualifying GATE. And the paper was very strategic in the sense that it has 3 parts. And the first part was related to maths reasoning. Second part was related to language. Third part was our literature. Literature part was it was my forte. It was my cup of tea. So I attempted with that. And in GATE, we know कि MSQ और MCQ दोनों आते हैं. तो MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट वहाँ पर आपका बड़ा एक जजमेंटल माइंड चाहिए, एक शार्प क्रिटिकल माइंड चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस में बी राइट, मोर देन वन ऑप्शंस में बी राइट. एंड एमसीक्यूज में जहां पर एक ही ऑप्शन सही होगा वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. तो नेगेटिव मार्किंग में मैंने आई टुक द मैक्सिमम रिस्क बिकॉज आई न्यू मोस्ट ऑफ द आंसर्स स्ट्रेट अवे. सो इन दैट सेंस आई थिंक कि जो गेट में रैंक आया 38, वो इसलिए आया क्योंकि आई टुक द मैक्सिमम रिस्क एंड आई came out brilliantly, I think, in most of those risks because I have already done the questions before. दूसरा जो आपका क्वेश्चन था सर कि गेट किसके लिए हेल्पफुल है, तो मैंने बताया कि गेट से आप पीएचडी एंट्रेंस आईआईटीज में कर सकते हैं. आईआईटी में पीएचडी एंट्रेंस का एक फैक्टर है वो. उसके बेस पर आप आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि कई बार पीएसयूज होते हैं, वो जब जॉब हायरिंग करते हैं तो उस समय गेट के स्कोर कार्ड को लेते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग स्ट्रीम में. बट हमारे इंग्लिश में भी अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये तीसरा चौथा बार अटेम्प्ट था गेट का, तो वहां पर भी जो है नए एवेन्यूज खुल रहे हैं. बट ऑल इन ऑल इट इज अ गुड पेपर फॉर ऑल एस्पायरिंग इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट्स स्पेशली ना. सर यू कैन गो फॉर इट. सर सो थोड़ा सा ब्रेक करेंगे सर, जस्ट अ मिनट. ओके सर. ठीक है. सो सर इसको आगे बढ़ाते हैं हम, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला. तो इसमें मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि फॉर ए क्रिकेटर scoring a century in every match is not possible. But how it comes to you that every time you go to play in the NET exam and you are scoring a century out there. मतलब आप हमेशा जो है वहाँ जो है बिल्कुल ऐसा स्कोर बना के आ जा रहे हैं कि एवरी टाइम यू आर क्वालिफाइंग. एंड मैंने देखा कि इन लास्ट 3 years यू इन एनी पेपर यू अपीयर्ड, चाहे वो पीएचडी था, चाहे वो नेट था, और इस टाइम पे तो कमाल ही हो गया जो गेट था. तो आप जब भी जा रहे हैं तो नए नए कीर्तिमान स्थापित करके आ रहे हैं सर. तो थोड़ा सा आपने जो ये 9 times नेट निकाला है, और आज भी आप जो है फॉर्म भरते रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि देखिए दैट आई एम क्वालिफाइड बट स्टिल आई कैन क्रैक इट. सो इसके बारे में बताइए सर, ये 9 times नेट का क्या है और 3 स्लाइड्स जो है आपने निकाले. सर जैसे हमारे काम में हम कहते हैं कि जैसे अभी आप जानते हैं कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, और हमारे इंस्टीट्यूशन में खासकर नेट की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट कोर्स को पढ़ाने के, उसको जस्टिस करने के लिए हमें जो है
अपने आप को अपडेटेड रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। और कीपिंग दैट थिंग इन माइंड दैट वन मस्ट be highly upgraded and updated for the NET exams. I appear for NET exams, and here I would like to bring some of the point of views that I have got through my life. Like Sir, one of the teachers told me कि भाई मेरा भी 4-5 बार नेट है, लेकिन मैं अब क्योंकि मेरे जाने से पेपर में अपीयर होने से बच्चों ने कहा कि मेरिट में फर्क पड़ जाता है या ओवरऑल मेरिट चेंज हो जाती है। sir, तो दैट्स अ वियर्ड लॉजिक आई थिंक, विद ऑल sir, रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स जो कि sir, ऐसा मतलब बोल रहे हैं। मैं आई हम्बली डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक के नेट में अपीयर होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तो sir, और जब हमारे जैसे टीचर्स अगर अपीयर होते हैं नेट में, तो क्या होता है हम लाइव सिचुएशंस को एनालाइज कर पाते हैं। और जो sir, लाइव सिचुएशंस को एनालाइज करने का जो एक्सपीरियंस है ना सर, वो sir. आप बाहर से एज अ कोच नहीं दे सकते। Exactly, कि sir. अभी आपने क्रिकेट की एनालॉजी दी कि एवरी टाइम यू गो एंड यू परफॉर्म, सो वो जो Sir, परफॉर्मेंस है, जो पिच पे परफॉर्मेंस है, जो 3 घंटे का हमारा और जो क्वेश्चन पेपर के बीच में एक जो रिलेशन है जो आप लर्न करते हैं वहां पर, वो sir, एग्जैक्टली जो है मुझे लगता है कि मैं हमेशा मजाक भी करता हूँ कि शायद आने वाले 8-10 सालों में भी जब तक मेरी हेल्थ परमिट करेगी, आई विल बी गिविंग एंड अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज इट्स अ वेरी means every time you come across 10, 15, 20 new questions, even after qualifying 9, 10, 20 times net. So that's the beauty of net exam, I think. And as far as gate exam is concerned, I have already told you ki if you are in right frame of mind and if you are always in touch with the subject, then even you don't need to study for it for a single day sir, individually, because you are sir. always in touch. That's the thing. Very nice, sir. Very nice. Very nice. So, sir, during Corona times, because that was the testing times for everybody, and but you have come out from that Corona phase. During that phase, you have come out as a warrior. Mhm. And what I could say that during that phase, you have gone to the hybrid teaching also. Earlier, you used to take offline, but then you started your online classes also. And Mhm. now, in current scenario, you are using the hybrid mode. Those who could not come to join Haldwani Institute, so you are offering online courses also of NET English and of LT and lecturer and even PhD entrance. You are giving the opportunity for the students to learn. And I have seen that even the students, those who are in college, in their the UG students, so they have also started taking coaching from you much earlier, much earlier. Because otherwise, earlier students, what they used to do, they used to come to you only after their graduation. So that Corona phase, how you rate yourself in that aspect, sir? That during that Corona was good or bad as far as your teaching goes, sir? How you have Mhm. come out as a warrior? How Mhm. you utilize that time of yours? Mhm. I would like to answer this with a quote, beautiful quote by Tennyson, that men may come, but men may go, but I go on forever. So a beautiful poem, a beautiful line. So I think this quote is in relation to Corona and nature. We know that nature, when it's nature runs its own course, then it's for the human beings to adapt. And we know the survival of the fittest theory. So it was the survival, and even the best, as you said, struggled. So I was also one of those. And through this video, I would also like to extend my heartfelt thanks to those who actually believed in the vision of KJ even during the difficult crisis. And I really say thanks from the bottom of my heart. And there were many teachers, many staff, many outside friends of KJ who helped us. And so my heart goes out to them.
and I really genuinely feel that it's because of them also that we managed to wade below the water, above the water rather. So आपके क्वेश्चन पर आता हूँ सर कि हाइब्रिड टीचिंग सर आज का दिस इज द नेम ऑफ द गेम। एंड हम ये देखते हैं कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को देखें तो आप देखेंगे, मैं आजकल यूट्यूब में इस बीच ज़्यादा समय मिला तो रिसर्च करी मैंने, तो मैंने ये देखा कि जो बेस्ट इंडिया के एजुकेटर्स हैं दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस video board technique. They are putting the big videos and then they are doing it, uploading it on YouTube. Smart boards. Yes, yes. So this technique is really integrating the students all over India, and I think that if one has got the talent, then why not use it for the benefit of all? So I think that in any case, teaching competition is an open game in India. If you can see that many toppers in all exams, the smart learners, they are actually using YouTube selectively and smartly and coming out with flying colors. Okay, so there are many students who are intelligent enough to use which resource, which channel, and how to use it, and then eventually they are coming up with their good results. So in that context, if I put myself, जैसे कि अब आपने बोला कि हमारा उत्तराखंड भी कहीं पीछे नहीं है सर ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम दिल्ली और राजस्थान और दुनिया तमाम एमपी बहुत सारे स्टेट्स के एडुकेटर्स को देखें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो उसमें अगर मैं अपने आप को या नॉलेज जंक्शन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम लोग भी कहीं किसी से कम नहीं है। वी आर अ ब्यूटीफुल हिल स्टेट। हिमाचल से बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो हम भी कहीं कम नहीं हैं। और हम जो कोर्स है, इतनी बार अगर मैंने जो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को सीखा, अगर हम उसको प्रोजेक्ट करें और उसका बेस्ट मीडियम, जैसे कि अभी बताया आपने कि हाइब्रिड है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ ऑन ऑफलाइन टीचिंग का जो एम्पैथेटिक एटीट्यूड, जो एप्टीट्यूड है, उसका एम्पैथी है जो उसमें, खासकर लिटरेचर से जोड़कर, तो वो तो आप उसको हटा नहीं सकते ऑफलाइन को। और एट द Right. सेम टाइम ऑनलाइन में क्या है कि आप कनेक्ट ज्यादा करते हो, और ऑनलाइन में जो रिसीविंग पावर है लर्नर्स की, ऐसे कई लर्नर्स हैं जो अभी भी मेरे पास दो तीन लोगों के फोन आए कि सर हमने आपसे पढ़ा नहीं, हमने खाली यूट्यूब चैनल में आपकी वीडियोस को देखा और हमारा सिलेक्शन हो गया, इधर एलटी लेक्चरर की बात करें तो ऐसे भी कई लर्नर्स हैं जिनके पास बस वो एज नहीं था। और अगर मैंने गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मेरी टीचिंग, मेरे वीडियो से उनको सफलता मिली, तो मैं ये मानता हूँ कि जो है हाइब्रिड टीचिंग इज द वे फॉरवर्ड, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जिस बंदे में दम है एज अ टीचर फॉर नेशनल लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल, नेट, वो जाए और यहाँ से परफॉर्म करे। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के काफी हमारे ऐसे अच्छे यंग टीचर्स, एजुकेटर्स हैं जो कि अगर उनको सही प्रोजेक्शन मिले यूट्यूब में तो दे कैन डू वंडर्स। सो तो हमारी जो सर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो जी। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी यही कह रही है कि आने वाला समय जो है हाइब्रिड टीचिंग का ही होगा। एंड यू हैव स्टार्टेड इट मच बिफोर द एनईपी एक्चुअली केम इनटू द फोर्स। तो आपने जो है अल्फ्रेड टेनिसन को कोट किया, हम्म, एंड आई कोट चार्ल्स डिकेंस, हम्म, अ टेल ऑफ टू सिटी, हम्म, दैट it was best of the times and it was the worst of the times, जी, that corona phase, and you have really started something new, and that was beneficial for the students like all of us, because the tyranny of geography is there, as our Uttarakhand is there, so everybody cannot be there, and people are living in the villages. वो एक आइडिया का ऐड आता था सर पहले की, जो है कि आइडिया में जो है वो मोबाइल फोन से जो है टीचर इज टीचिंग एट वन प्लेस, एंड वो आइडिया के फोन से पढ़ रहे हैं लोग। तो जब नॉलेज जंक्शन ने स्टार्ट किया तो मुझे जो है वो आइडिया का एडवर्टीजमेंट याद आया कि मतलब दैट हैज बिकम ए रियलिटी, हम्म, राइट। सो आगे बढ़ते हैं सर, आपका क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने इसी कोरोना फेज में अजय आर्या सर के साथ एक बड़ी प्यारी सी किताब लेकर आई थी, क्वेश्चन एंड आंसर्स की, इंग्लिश लिटरेचर पे। और तो उस किताब को लिखने का मकसद और उस किताब में क्या क्या था सर, जो है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
सर ऐसा है कि एक शेर के साथ मैं इसको बताना चाहूँगा कि हजार बर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोरोना टाइम आया तो हम लोगों के पास और ज़्यादा समय मिला ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। और अजय सर भी उस समय हम लोगों के साथ ही थे, और हम लोग का ये ब्रेन चाइल्ड था बुक को निकालने का, बहुत समय से चल रहा था। तो अचानक से वी स्ट्रक, यू नो, इट वाज अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। एंड जिसे मैं कहूँगा कि हम लोग अलग अलग लोकेशंस पर गए उसके लिए। करीब 7-8 लोकेशंस बड़ी खूबसूरत पहाड़ की हमने चुनी, और वहाँ 2-2 3-3 दिन रहे और उस प्रोजेक्ट को हमने जो है किया। तो अभी भी बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं मेरी अजय सर के साथ उस प्रोजेक्ट पर। तो इवेंचुअली एक छोटी सी किताब हमने, एक छोटा सा गुलदस्ता, ब्यूटीफुल यू कैन से कलेक्शन, आई थिंक अगर आप उसको इंडियन लिटरेचर एमसीक्यूज की सीरीज को, अगर आप इफ यू पिट इट अगेंस्ट एनी बुक दैट वी हैव गॉट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर एमसीक्यूज इन इंग्लिश, you will find it second to none, because all the questions were original and we created our own language. Although we got some very valuable inputs from one of our senior professors, and it was related to framing of the questions. So thanks to that sir also. But at the same time, it was our first project, so humble beginnings. We could not actually put it across on Amazon or Flipkart. So that is the fact that I always do because of my busy schedule. बट अगर हमें इस वीडियो के माध्यम से कोई सुन रहा है तो वो हमें अगर मौका दे और वो हमारे उस वर्क को करे, तो हम वी विल बी हैप्पी टू पुट दैट बुक ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। Very nice, sir. And as your students are listening to you, so any book which you feel personally is good for English learners, especially those who are learning literature, Sir, one because project that you suggested, in fact, to us, and we actually started to think about that. But it's still in the pipeline, because writing a book, especially in the uh, crazy schedule that we have got in modern times, it's a difficult task. But at the same time, it's in our back of the mind that we are going to launch one book on academic, especially our Uttarakhand students, the Garhwal University, the Kumaon University that we have got. So integrating the syllabus of all these universities, the graduate and postgraduate course of English literature. So that's in our range, and is in our sight, I would say, and also in the range, because language is not an issue for us, but at the same time, timing is an issue. So we are working on that. Let's see if we can make a project out of it. Because I have also learned one more thing, that book writing is actually more of a uh, it is not a business basically, because right. you are doing it for empathetic understanding for the students. And because books you can sell it one by one, unless you have connections in government colleges or universities, you can sell it one by one. Or else you can have, if you have this you can say link through Amazon or Flipkart, then also you can scale the business there. So it's one thing that I have learned here is that it's not for the business purpose. It's just our genuine zeal to share a little knowledge that we have with our students. That's going to be the driving force again, as it was in the first book. And it was liked by many students. Luckily, we did not get hard criticism for that book. I was worried that we may get some harsh criticism as well because of certain things. But because it was an honest attempt, and in any case, plagiarism was not there. So we did not get that kind of criticism. Yes, there were some suggestions for improvement that we have taken into consideration. So, So yes. plagiarism is a new reality. Even Shakespeare used to do that. So even in this 21st century, you are avoiding it. So hats off to you, sir. And any books you would like to recommend, those which are already available in the market for English literature students?
from your side, sir? Very good question, sir, and a very relevant question for all our viewers and aspirants. I think one book that I would really love to share every time without any second thoughts is Glossary of Literary Terms by M.H. Abrahams. It's a very useful book, especially for all NET and SLET aspirants. It's a difficult book in a way because it was written by an American, and the language is at times difficult, but at the same time the book covers everything in a nutshell way, and it is a compendium of literary terms. So I always say that when I was preparing my NET JRF in the early phases, I literally just plowed through this book and revised it twice or thrice before eventually I got my NET and JRF thing. So second is a history of English literature is always there. And in that, there is one writer from our India, P.K. Nair, is a very good writer. And I have read books from P.K. Nair, sir. I have recommended multiple times to our Uttarakhand students. He has really written in a very lucid and simple language, and his book is really beneficial for our LT and lecturer grade students, especially in Uttarakhand, where the education is like that, that most of the graduates or postgraduates, sometimes they don't get the quality education. I'm not blaming the college education, but at the same time this is a reality. So PK Nair is there. Then history of English literature, you can further go, like there are many books like Edward Albert is there for modern. And then in MCQs we have got youth competition times for TGT PGT. Then Ghatna Chakra publication is a very good book. These two books are useful It's for of TGT. UP, sir. It's Yes, of UP. both the books are from Allahabad, UP, and they actually, what they have done is they have got the collection of questions, and then they have written the annotations of that. And then there is one more book for NET English aspirants. I think it's a very good book where they have given the solutions of all the NET previous year questions of the last 3-4 years. I think it's also by youth competition times only, and that's for paper one also, and for paper two also. So it's a good book. So that is there. Okay, sir. Okay, very nice to hear that. And sir, recently KJ has shifted to a new location in Haldwani. Earlier, it was at the Nawabi Road, but now you have been shifted to a new location. So whether this new location is accessible to the students, and in comparison to the your previous location where you used to be. So what would you like to say about it? Sir, our new location is Block Choraha. So it is just a stone throw distance from my house, which is hardly mainly 300 to 400 meters from there. So one reason for shifting the location was my health concern, and because of that, I have to daily commute from a faraway location to my house. So I am lucky and fortunate enough that students throng the coaching institute right from the first day when we opened the institute. And I was lucky and fortunate enough that I have got a huge heartwarming response for that location as well. There are many students who are now from that location, that is block. It is on the Kaladungi Road, and it is more closer to nature, I must say. And at the same time, this location gives access to English aspirants, particularly living at that place nearby. The earlier place was more of a commercial venture, and this place is more of a, you can say, location closer to my house. At the same time, I am also in the better frame of mind because I don't need to commute a lot. So that is helping me in taking myself to a next level of preparation for English, and for content selection. I think I am getting better and better. And in fact, I was telling you off air that there is a spike in the rise of, or there is a rise or spike of the subscribers that we have got in Right, sir. Knowledge Junction 2.0 channel. So the reason is that we are actually now creating more quality content than ever before.
And the one reason is that I am closer to that, my house is closer to that location, so I can fetch more time for myself and getting the quality content for the students. So it's a win-win situation for the new location as well. Obviously, sir, it is saving your time also. Yes. Because earlier you used to waste a lot of time reaching out to the institute, and then weather conditions were also there, and then traffic of Haldwani, all those things were there. So now it is better that the new location is nearby to your house, and at the same time that accessible to the students. And one more thing I would like to say, that when it is dog's goodwill, as you have got, so students will come and ask for you, and wheresoever you would be, whether you are on the ground floor or you are on the 100th floor. Yes, But yes. and so there is I would not say that it is any good luck. It is your hard work, sir. That your students are having, that dog's goodwill to you. If it would be cat's goodwill, so definitely they would not be there. But Yes. you have achieved this thing, sir, by your hard work. So let's move ahead. That recently the lecturer exam and LT exam, KJ has remained a huge success in itself, and many lives, those who have never thought of getting a government job, now they are the lecturers. They are LT teachers of English language and other languages also, because you are taking other subjects also at the same time. Many of your students are also assistant professors and professors. I know it very well. But because this teaching job in Uttarakhand is something which is more lucrative to the students, to the general public, and more people, those who are educated, and they have tried their luck everywhere, and at the last, or might be that it could be their first choice. So it remained that being government teachers. So throw some light on this success story of yours. How many of your students got through this time in lecturer and in LT, sir? Sir, The in final selection. lecturer also, there were more than 40 students who got the eventual selections. Out of the 40 students, I'm just giving you a rough data. Out of the 40 students, more than 25 plus students were from English in lecturer. And in LT English, we have got 30 plus students who got the final selection. Actually, one thing that I would like to say here is that it was In actually, LT, it was English, sir. yes, yes, in LT And English. in 40 were the lecturers. Yes, yes. Okay, sir. So, Okay. and we are still counting when actually what happens in the coaching business, that there are some students who took coaching from us even 2 years back. So it's a gray area whether to include these students as our results or not, because after that, eventually, when the exams appeared, they just before that final batch, they did not take the classes. But so it's a gray area. And one thing that I would like to share through this interview is that there are many students who have qualified here directly or indirectly from our KJ. And last time around, we were lucky enough to get a good team of teachers. So through this video, even in non-English subjects like history, Hindi, economics, or chemistry, physics, there are maths, there are many different subjects in which, especially in lecture Uttarakhand, where we performed and did give the selection. So one more thing, that it's the hard work of students actually who made this possible. And I, as always, did my part. And one thing that I would like to say here is that um, whenever the students get the final selection, I always believe that it's their duty to actually be humble and to remain grounded and to continue strive for excellence, continue striving for excellence. I have shared this off record also, that in corona times also I realized that there are many students who, although on openly acknowledge that thing, but it's one thing that acknowledgement, and it's another thing to follow that thing in spirit, the genuine admiration, love for the institute, for the teacher,
and to help the students or to help the institute also in the crisis. That Right, should sir. be one of the, one of the not essential duties, but at the same time it should be right at the heart of our students also. I am not expecting everyone to or anyone to give favors to us, but at the same time it should be a genuine heart to heart connect. So I have noticed that there are certain students, once they get qualified, they actually kind of, um, start taking everything into their own, you can say, consideration. And so I think that should not be there, and this is where heartfulness actually beautifully manages the things here at KJ. I am also, by the grace of Almighty, by the grace I of, was coming to the heartfulness meditation, sir. yes. So the same question I was going to ask you, that because you are also mentor of heartful meditation, and not only mentor means, but state mentor. So how it is, what heartful meditation is all about, and what is your role in it, and meditation is beneficial, or how it is beneficial, sir, for the students. So that is what I wanted to know from you, sir. Sir, one thing, one correction. I'm not a state mentor. I'm a state, you can say, coordinator for one. Coordinator. I'm sorry for that. Yes, Yes. state coordinator, sir. State Yes, yes, yes. coordinator for one initiative of Heartfulness that is called as One-to-One Connect. And Okay. also, at the same time, I am also a preceptor, that is a certified trainer of Heartfulness. And Knowledge Junction is a sub-center of Haldwani, you can say, ashram. And we are lucky that many students adopted this beautiful heart-based meditation. And even you have experienced it, even I Right. have experienced it, and it's a beautiful way of, here the one thing is transmission, that is pranahuti, which is a kind of, you can say, a force which helps in getting our meditation to a deeper conscious state. And it's a the best thing is it's free of cost, it's available online, and we are creating history of sorts. Our global guide Kamlesh D Patel has made the biggest, would you believe it, the biggest meditation center of the world, Kana Shantivanam at Hyderabad, where I have visited it at least 3 or 4 times till now. And I would say that it's a marvel of the modern era. I am truly telling you, the way it has been built. I would, through this video, I would heartily invite all the seekers who have already took the meditation to go out there and to see the beautiful marble Kana Shantivanam. It's a beautiful, beautiful place. It's a huge village, 40 kilometers from Hyderabad, and it was actually such an inspiration that I try to imbibe it in a to a smaller degree at our KJ also. It's the nature theme and all those things I try to imbibe. So meditation, sir, हमारे विचारों को संतुलित करता है, इसको बैलेंस बनाता है। सबसे मेन क्या है कि जो हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो एंजाइटीज और वरीज हैं, उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब लाइफ में क्राइसिस आते हैं, तो एक हमारे पास जैसे केजे फैमिली है, ऐसे ही हार्टफुलनेस फैमिली भी होती है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे अभ्यासी भाई बहन हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। एंड वी नो दैट यस, देयर इज समवन हु विल नॉट चीट, हु इज देयर टू हेल्प जेन्युइनली। तो एक ऐसा हमारे पास, एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई हर जगह अच्छा है, बट एट द सेम टाइम एक ऐसी संस्था है जो निशुल्क अपने तरीके से इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने में हेल्प कर रही है। और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा, आपका, हम सब लोगों का इसमें जब होता है, तो हम लोग का हृदय जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा हो जाता है, आवर हार्ट बिकम्स ह्यूज। Right, sir. Right, sir. The way you have just described Kara Shantivanam, so I am expecting in near future that I would also be visiting it very श्योर soon. सर, श्योर, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you, sir. Thank you. And the last and not the least question to you is that as most of the questions we have already discussed in the interview, and I am really feeling privileged and astonished and delighted
by all this, the way you have answered all the questions, and my doubts also been cleared. And I hope that the students, those who would be listening to this video, would be able to understand knowledge junction and Mr. Saurabh Upreti uh, in a better way. And finally, sir, any message you would like to give to your students, sir? Sir, message is it's very simple that let us all be learners of life. Let us all continue to strive for learning. Whenever we are in our general life, we are all occupied with our household struggles, with our job struggles, with our every kind of struggles are there. Health issues. There are so many struggles that one goes through. But despite all that struggle, if we can still maintain our hunger for learning, our passion for putting ourselves in a competitive state of mind of Sir, knowing things more and more, this endless wisdom that we have been given, not only in academic way but also in a spiritual way also. I am marveled at the spiritual wealth that we have got in India, especially when I joined Heartfulness. There are so many techniques through which we can self transform, and there are so many things through which we can iron out our weaknesses. So many things to learn, not only academically but also in life, and to keep connecting ourselves with positive sources of energy. Keep doing meditation, because meditation is actually the thing which changes our software, and if our software is correct, the hardware will eventually be always be ready. So meditation को अपना हिस्सा बना लें, लर्निंग को अपना हिस्सा बना लें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, लाइफ में स्ट्रेस को हटाएं अपनी लाइफ से, एक हेल्दी फिजिकल मेंटल लाइफ को जिएं, और एट द सेम टाइम जो जो हमारे साथ कारवां में जुड़ते जा रहा है उसको जोड़ते रहें। कि एक शेर के साथ मैं भी इस बात को कहूंगा कि कुछ इस तरह से चल कारवां के साथ ए नजीर, कि जब तू ना चल सके तो तेरी sir. दास्तां चले। Wow, sir. Wow. तो कुछ इस तरीके से हमें करना है कि लेट अस कीप ऑल touching the lives. And I am lucky enough that you are taking this interview. I could also be taking your interview because you yourself have done so many things, and people like, there are so many good people in our Sir, system, in our Uttarakhand, in our state, in our country, who are doing valuable, wonderful services to our nation, to our community. And may sir, this interview, through the beloved master's help, be helpful in propagating this message of love, unity, brotherhood. sir. So I never forget, sir, one thing you always quote, that being the better version of yours, Correct. always Correct. and every day. So I believe in that. And I also tell it to my students also, that my Guruji always say it like this. So you should be a better version of yours. What you were yesterday, you should be better than yesterday today. And tomorrow, you must be better than today. So, sir, it was really a fantastic time which we spent last almost 40 or 50 minutes with you, sir. And I wish you all the very best to Knowledge Junction YouTube channel of Knowledge Junction 2.0, and to all the mentors out there, especially those who are working day and night for Knowledge Junction. And I hope that in coming times, this institution is going to remain successful by leaps and bounds. So I wish you all the very best, sir. In coming times, a new year, Vikrami Samvat 2080 is going to be started from 22nd of March. And I wish all the very best in this new year, sir, to you Thank you and to so the much, Knowledge sir. Junction. Thank you so much, and thank you to all for listening to this video. And thank you, Negi sir, for taking time out for this beautiful interview. It was a really a wonderful interview. It's And always a pleasure, sir. It's always a pleasure talking to you, sir. same here, sir. Same here. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.
Thank you, all the viewers. Thank you.